SR flip-flop, one particular behavior, before we can check the, actually, what is the behavior, how we can convert the flip-flop. Okay. And I have already discussed, when we are talking about the flip-flops, that time what happened, there are two particular states are there. One is called a present state and one is called a next state. Okay. And this particular excitation table is required when we are converting one flip-flop to the other flip-flop. If you are not getting, then please ask me. Okay. So without this particular excitation table, you cannot convert. So this particular, sir, yes. Yeah. PPT is not visible. You are disturbing again and again. When I am starting the class, someone is again joining, someone is again joining. It is unnecessary to even a time. So why you are not before 9 a.m. you are not joining? Wait for a few minutes. Now it is visible, all of you? Yes, sir. So what happened? So without this particular excitation table, it is not possible to convert one particular flip-flop to the another flip-flop. Okay. So what happened, based on the present state and next state, we can convert any particular flip-flop to the, from any particular flip-flop to the other flip-flop. Okay. So see here, this particular excitation table, actually it is constructed from the state table. State table of SR flip-flop, state table of JK flip-flop, state table of T flip-flop, and state table of D flip-flop. So you can just, you have a remember, then please in front of you, you open your state table of SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, and D flip-flop. Then you can understand. Otherwise, you are not getting, otherwise, initially you will face difficult. Okay. See here, in the SR state table, when present state is 0 and next state is 0, that time what happened? So that time what happened? We are getting the S equal to 0 and R equal to don't care. R equal to don't care means what? When present state is 0 and next state is 0, R value is 1 time is 0 and R value is 1 time it is 1. If you carefully check the state table of SR flip-flop, then you can get. So here I am writing here 0 and don't care. Are you getting my point? Here I am writing 0 and don't care. When see present state is 0 and next state is 1, that time what happened? S equal to 1 and R equal to 0. It is fixed. So here I am writing only 1 0. And when the present state is 1 and next state is 0, that time what happened? S equal to 0 and R equal to 1. But when present state is 1 and next state is also 1, that time what happened? S value is, I'm talking about the SR flip-flop, S value is 1 time is 0 and 1 time is 1. But R value is fixed. So here I'm writing fixed value 0. So this particular portion we are getting from the state table of SR flip-flop based on the present state and next state. Similarly, when we are going to the JK flip-flop, and if we carefully observe the state table of JK flip-flop, when present state is 0 and next state is 0, that time what happened? J value is 0, it is fixed constant, but K value is 1 time is 0 and 1 time is 1. So here I am using the don't care. Okay. Similarly, when present state is 0 and 1, that time what happens? JK value is, we are getting 1 and don't care. And 1 is 0, when present state is 1 and next state is 0, that time we are getting the don't care and 1. So you can carefully observe. But see here, T flip-flop, only one particular single input is there. So see here, when present state is 0 and next state is 0, that time what happens? T value is 0.
present state is again 0 and next state is 1, that time what happen? T value is also 1. This way we can find out this particular T value and D value based on the excitation table. And when you are constructing this particular excitation table, you have to know what is the state table of each flip-flop. Without state table, you cannot construct this one. So this particular excitation table have a clear, all of you? Any doubt, then please ask me. Any doubt? This particular सर yes. सर मतलब इस टेबल में हम पहले जो एसआर टेबल ले रहे थे तो वो एसआर आर के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर नेक्स्ट स्टेट डिपेंड कर रहा था, तो इसमें 0 प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट के ऊपर एसआर का वैल्यू डिपेंड कर रहा है ना? No, depend how depend कर रहा है कि नहीं कर रहा है, that particular part we now when we are constructing the excitation table, that particular part we are not caring about that one. Okay, just आप एक काम कीजिए, आप आपका नाम क्या है? दीपज्योति शर्मा। दीपज्योति शर्मा, अगर आपने लिखा है, आप एक काम कीजिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल निकाल लीजिए। हाँ सामने है मेरे। अच्छा ठीक है, जस्ट मिनट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छा उसमें देखिए, when present state we are denoting as a what? Q। वो स्टेट टेबल में देखिए Q का वैल्यू, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट देखिए QT+1 देखिए, उसमें जब दोनों का वैल्यू 0 0 है तो एसआर का वैल्यू क्या है? एसआर का वैल्यू क्या है? आई एम आस्किंग यू। सर कैन यू रिपीट सर, लैग हो रहा है। When Q equal to 0, okay, and QT+1, QT+1, that means next state is 0. What is the value? What are the value of H and R? 0 0. Yes, correct. And after that, any other sequence are there? Yes, 0 1 reset हो रहा है ना? हाँ, तो R का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 टाइम इज 0 एंड 1 टाइम इज 1। तो प्रेजेंट स्टेट में 0 होने से 0 1 चेंज हो रहा है। प्रेजेंट स्टेट में 0 होने से नेक्स्ट स्टेट में 0 होने से क्या हो रहा है? R का वैल्यू एक बार 0 हो रहा है, एक बार वैल्यू क्या हो रहा है? Occurring as a 1. Okay, change हो रहा है। For that particular purpose here we are using the don't care. And I have already discussed why R value is 1 time is 0 and 1 time is 1 when we are discussing the SR flip flop. Okay, so same way you can say when present state is 0 and the next state is 1, that time what happen? S equal to 1 and R equal to 0. So I am telling you, when we are constructing the excitation table, and why this particular table is required, when we are converting one flip-flop to the another flip-flop, that time excitation table is required. Now next question is that how we can construct the excitation table. Excitation table we can construct with the help of state table of each flip-flop. You can similarly, if you are going to the JK flip-flop, then present state is 0 and next state is 0. That time also you can see K value is 1 time 0 and K value is 1 time 1. So here I am writing 0 and don't care. So this way we can construct JK flip-flop, T flip-flop and D flip-flop. But remember one thing, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अगर वो सोच रहा है कि बाद में मैं सर से पूछ लूंगा बा किसी दोस्त से पूछ लूंगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, बहुत सारा चीज में सिंक होगा। When you are designing the sequential circuit, that time also this particular excitation table is required. It is not like that only conversion purpose we are using this particular flip-flop. So I am requesting all of you, if any doubt in this particular table, then you can ask me clearly. Okay, you are not getting any doubt, then I will proceed to the next slide. Okay. Now I am taking one particular example. Suppose we are interested to convert SR flip-flop to the JK flip-flop. We are converting SR flip-flop to the JK flip-flop. Then how we can convert? So what happen? Obviously, when we are converting one flip-flop to the other flip-flop, that time what happen? We are taking the input of JK. Why we are using JK? Because we are converting SR to JK. Okay, SR to JK. And also we know what is the present state and next state.
And when we are getting the present state and next state, then what is the behavior of SR flip-flop? Because from the SR we can convert to the JK. So here I am writing SR flip-flop. That is the rule when we are converting SR flip-flop to JK flip-flop. You just remember this particular template. So what happened? Why we are using JK? Because we are getting the output as a JK flip-flop. But right now we have a no JK flip-flop. Okay. So this particular information is coming from SR flip-flop. For that particular purpose, we are writing here SR flip-flop. Okay. And which particular output we are interested? We are interested JK flip-flop. So here I am writing JK input. And based on the JK input, that means what? We are generating the, based on the SR, we are generating the output. Output means what? Q is behave like as a present state and Qt plus 1 behave like as a next state. Okay. Now we see here, this particular up to this, we are writing in the binary encoding format. So what binary encoding? We are writing 0, 0 because we are using the 3 variables. 2 to the power 3 means what? 8. And we are counting 0 to 7. So this one is 1, 1. 0, 0, 0, 0 to 1, 1, 1. Okay. So when we are getting J, K and present state, then what happen? From the JK state table, we can easily get the next state. Suppose something like that, if you are A plus B, suppose equal to C. Okay, if you know the value of C, if you know the value of A, that time what happen? Automatically you can get the value of B. So this way, if we are from the state table, if we are getting the value of J, K and present state, then we can extract the next state from the state table of JK flip-flop. And when we are getting the state table, that means next state, this particular value belongs to the next state. When we are getting this particular value, and based on the combination of present state and next state, we are easily extract the what is the SR flip-flop. And this particular value is coming from the excitation table. See here from the excitation table, when 0, 0, when this one is present state is 0 and next state is 0, what is the value of SR? S value is 0 and R value is don't care. Same thing we are writing, when present state is 0 and next state is 0, that time what happen? S value is 0 and don't care. Similarly, see when 1, 1, that time what happen? From the excitation table, S value is don't care and R value is 0. See here, when it is 1, 1, 1, 1, this one 1, 1, then what happen? S value is don't care and R value is 0. So here I am writing S value is don't care and R value is 0. See here, when present state is 0 and next state is also 0. Okay, that time what happen? We are getting S value is 0 and R value is don't care. And how we can get this one? It is already mentioned in the excitation table. See here how when the present state is 0, present state is 0, and what we are talking about? Yes, when present state is 0 and next state is 0, what is the value of S? S value is 0 and R value is don't care. And see, when it is 0, present state is 0 and next state is 0, S value is 0 and R value is don't. So this way we can construct this particular table is called a conversion table. What is the name? We cannot say that this one is the state table. This one is called a conversion table. CONVERSION, conversion table. Any doubt this one? If any doubt, please ask me. This one is called a conversion table. ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? ये सबको आ रहा है? Okay. सर जेके वाला पार्ट कैसे मिला वो एक बार फिर से बताएंगे? जेके यस, जेके पार्ट हम लोग को कैसे मिला वो नहीं जरूरत है,
just we can providing the input as a J, K, and Q. Q means what? For a time being, when you are, because we don't know about the what is the future state, and we don't know, that means how we can after manipulating the circuit, what type of outputs are generating, we don't know, but we know that what is the value of present state, what is the value of J and K. Okay, so how we can getting this particular J and K and Q, we are writing in the binary encoding format. Suppose how we can write the binary encoding: 0 0 0, at first this one is 0, this one is 1. We can writing all the possible combinations up to 2, because 3 variables are there. 2 to the power 3 means what? Up to 0 to 7 we are writing all the combinations. Okay, then when you are getting the J value, K value, and present state, then you can, from the state table of JK flip flop, you can automatically get the value of next state. Okay, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा जिसमें a प्लस b प्लस इक्वल टू c है, तो आपको a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, तो ऑटोमेटिकली आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो इसी तरह अगर हम लोग अगर स्टेट टेबल का जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल हम लोग देखेंगे जिसमें जे और के और प्रेजेंट स्टेट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर बाइनरी सीक्वेंस को लेके उसमें कौन सा नेक्स्ट स्टेट होगा वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो that means how we know this J, K and Q, from that particular value we are getting the next state. And when we are getting the next state, when you are getting the next state, that means you have a now present state and next state. So when present state is 0 and next state is 0, then what is the value of SR? So that particular value, this particular value we are getting from the excitation table, this table. Okay. So so you can clearly know, that means when we are using the excitation table and when we are using the state table. Okay. Now see here. Now see here. Now based on this particular this table is called a conversion table. Remember, this one is called a conversion table. So from this particular conversion table, we can directly draw the KMF. Okay. So how we can construct the KMF? Okay. So see here, we are using, sorry, here I am using, don't use the QP, just use the Q only, because from the state table I am mentioning, you can, if you are using in QP here also you can use here QP. Okay. But here I am using only Q. So you can just consider JKQ. This one is the JKQ. And don't use the P here. Now, otherwise it is confusing. JKQ. See here, see when JK, because this particular truth table, this particular KMF we are constructing for S, and another KMF we are constructing for R. Okay, but our input is same. We are taking this particular J, K, and Q input, this particular input. Okay, so where see here, when J, K, Q, when it is 0, 0, that time what happened? This is also 0, S also 0, and when it is 1, see this particular combination is 1. When J value is 1, K value is 0, and Q value is 0. So see here 1 0 0. 1 0 0 means which one? 1. Here I am writing 1. Okay, and another one is this one. When J value is 1, K value is 1, and the present state is 0, that time what happened? 1 1 0 means here I am writing 1. And all other part are 0 0, and when don't cares are there, terms are there, we are using the don't care terms there. Okay. So what happened? Normal grouping of KMF, we are, this particular one group is possible, this particular group, and this particular group. Based on that, we are getting, you can cut this one. What is the S value? S value we are getting JQ bar. Q bar. JQ bar. JQ bar. Yes, JQ bar. Okay, we are getting this one. And just you can't. And similarly, when we are constructing the KMF for R, we are getting KQ.
Okay, you don't use here QP because we are not using, instead of QP, we are using Q. So here I am writing KQ. Now, based on this particular expression, you can design the logic diagram. So this is the part of the combinational circuit. And this is the flip-flop, normal flip-flop. Okay, and see here, you know what is the, because we are interested to convert the SR flip-flop to JK flip-flop. So what happened here, we are considering the input of JK, and whatever the outputs are generating, this particular output is similar to the JK flip-flop, but we are using the SR flip-flop. The conversion we are doing through SR flip-flop. So you know what is the logic diagram of SR flip-flop? We are, one is S and one is R. So see here, S is connected J and Q bar. So J and Q bar means what? This is the sub from. Okay. So J and Q. So Q bar means what? Sorry, this one is, you can consider only Q, and this one is, you are considering only Q bar. Now what happened? This particular Q bar we are connecting here. This one is the Q bar. This particular line carrying the signal as a Q bar, and this one is J. And this particular input fed as a S. Why? Because from the KMF we are getting J dot Q bar. So it is connected with S. Okay. Now R means what? KQ. So K is already we are inserting as an input. And where we are getting Q? Q, this one is, this particular signal is Q. So just we are connecting this one as a here R. So that is the conversion from SR to J. Any doubt? This one? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then please you ask me. I have to सर बोलो सर J के साथ तो J SR to Q जा रहा है, और उसके बाद Q डैश जाएगा ना ऊपर से, J डी एंड गेट. कहाँ पे बात कर रहे हैं आप? S के लिए बात कर रहे हैं कि R के लिए बात कर रहे हैं? लॉजिक डायग्राम J एंड J. J means what? From the KMF what we are getting? S equal to J dot Q bar ना? तो S है, हाँ S है, तो Q bar कौन सा है यहाँ पे? ये है, ये Q bar है ना, ये कनेक्ट हो रहा है ना आपका यहाँ के साथ, इसके साथ. ओके. तो इसलिए मैं तो यहाँ पे लिखा Q bar. ये देखिए Q bar, और ये J है. So J dot Q bar, वो dot means what? It is the AND gate we are using, because here it is dot. This particular one is sub from. J dot Q bar means what? We are using the AND gate. We cannot use the OR gate. So here I am using the AND gate, this one. And another one is R equal to KQ. K between the K and Q, what is dot is there. So here I am using the AND gate here. AND gate. Okay. So this way we are converting SR flip flop to the JK flip. Okay. Yes, sir. Next one you can try yourself. This one JK flip flop to SR flip flop. Now this one is what? This particular one is, I'm just, because it is very lengthy, again I'm drawing the table and again design. So this one is I am directly copy from the internet. Okay, so just, and this particular table is called a conversion table, similar. And now what happen, instead of QP you can consider Q also. You can write here Q also, or QP plus 1, you can just write QT plus 1. It does not matter. Okay, but whatever a variable we are using, just you can use in KMF also. Otherwise what happen, it is confusing. One time if you are declaring as a QP, and in the KMF if you are using some other variable Q instead of QP, then it is problem. Okay, so if you are, whatever the variable you are using, same variable you have to continue in the whole process. Okay. Now see here, now you can carefully draw this particular conversion table, and if you are getting any doubt, then you can ask me. A similar way, try yourself, and if you are getting any doubt constructing the conversion table, then please ask me.
मम्मी मम्मी आज ही पानी भी दे दो पी के। दवा दे देते हैं। जरूर खाइए। You are getting? सर ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप को एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्यूपी और क्यूपी प्लस 1 का लास्ट दो इनपुट जो है 1 1 वाला, उसमें इनवैलिड आता है, लेकिन जेके वाले में इसको डोंट केयर माना जाता है। और ये दोनों कन्वर्ट करने के बाद आप दिखा रहे हैं कि जे वाला को एस वाला में सीधा रख देना और के वाला को आर वाला में, यानी टेक्निकली जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो अभी भी जेके फ्लिप फ्लॉप जैसा, ये कोई खास अंतर है नहीं उसमें, है ना। तो ये फ्लिप फ्लॉप अभी भी अगर एस और आर दोनों में 1 1 डालते तो डोंट केयर ही देगा ना, इनवैलिड तो देगा नहीं, जैसा एसआर इनपुट में एक्चुअली आना चाहिए। आपका नाम क्या है? उद्देश्य राष्ट्र। अच्छा, उद्देश्य रॉय। उद्देश्य रॉय। ओके, जस्ट मिनट देते केला। Udesh Roy, your question, okay, you are asking very some type of logical question. It is good, okay, but एक बार invalid देखा रहा है बोला एसआर में, और एक बार आप बोल रहे हैं कि डोंट केयर देखा रहा है। सो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डोंट केयर जो हम लोग इनवैलिड देखा रहे हैं वो अपने आप हम लोग नहीं देखा रहे हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे कि एक बार इनवैलिड देखा रहा है एक बार डोंट केयर देखा रहा है, वो अपने आप हम लोग देखा नहीं रहा है, वो 2-3 क्लास से जो हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि ये इनवैलिड है। ओके, अभी आप हाँ कैसे इनवैलिड आया वो में मुझे पूछेंगे तो मैं आपका ये आंसर में दे सकता हूँ। आपको पता होगा when we are discussing the SR flip flop, you know, if you go to the state table of SR flip flop, when S equal to 1 and R equal to 1, that time what happen? The next state we cannot determine. That means it is invalid state. Okay, it is the indeterminate state. That means what? We cannot predict, we cannot get the ultimate solution, it is 0 or 1. Okay, and जब मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, जब जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैं बोला था कि जेके फ्लिप फ्लॉप इज ए रिफाइनमेंट ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या, एसआर फ्लिप फ्लॉप में सेम प्रॉब्लम क्या होता है कि when s equal to 1 and r equal to 1, that time we are getting the invalid state. Okay, but what happened again, you remember when we are going to the JK flip flop, when j equal to 1 and k equal to 1, are getting my point? When j equal to 1 k equal to 1, one toggle is occur. Toggle means what? एक टाइम में वो जीरो होगा, रिपीटेडली वो क्या होगा 1 होगा, दोनों के बीच में रेस होगा। सो उसमें भी हम हाँ तो उसमें भी हम लोग कोई फिक्स वैल्यू हम लोग वहां पे दे नहीं सकते। ओके, बेस्ड ऑन दैट we are writing here invalid. Invalid किस लिए हुआ? Because SR flip flop में हम लोग का present state और next state we cannot determine. Okay, but again what happen when present state and next state is indeterminate, then how we can predict the JK value? So here we don't know, it is maybe 0. Obviously कुछ तो होगा, लेकिन we cannot, it is not determined, it is we cannot predict it is 0 or 1. For that particular purpose, ये देखिए J और K कॉलम में जब S equal to R and S and R equal to 1, उसमें मैं क्या लिखा हूँ? डोंट केयर। तो इसके लिए डोंट केयर है, ठीक है। अभी बोला कि कोई अंतर नहीं है, अंतर का बात यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई अंतर हम लोग अंतर का डिटर्मिनेशन करने के लिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई अंतर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि based on the behavior of the JK flip flop and SR flip flop, how conversion process is completed, how we can construct the conversion process, और S
S इक्वल टू J एंड R इक्वल टू K कैसे आया? वो अंतर होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम लोगों ने नहीं बनाया। ये कंस्ट्रक्शन टेबल से सॉरी ये कन्वर्जन टेबल से हम लोगों ने क्या किया, ये केमैप टेबल बनाया। केमैप किस लिए बनाया? बिकॉज 1 टाइम 4 इज J, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम J टू SR फ्लिप फ्लॉप। ओके, एक के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, केमैप बनाया। J के लिए एक केमैप बनाया, एक K के लिए एक केमैप बनाया। जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने ये केमैप कंस्ट्रक्शन किया। इसके लिए भी हम लोगों ने केमैप कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, उसके बाद बेस्ड यू कैन गो टू द फॉलो द रूल ऑफ केमैप। सो इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ जिसमें ये ग्रुप के लिए J इक्वल टू S आया और ये ग्रुप के लिए क्या हुआ, K इक्वल टू R आया। और कोई पॉसिबल ग्रुप नहीं, यही ग्रुप है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ केमैप। तो उससे क्या हो गया, J इक्वल टू S, सो J डायरेक्टली S के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे दिखा रहा है K इक्वल टू R, सो K को डायरेक्टली R के साथ कनेक्ट कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, मैं जो बोला आपको समझ में आया? किस लिए इनवैलिड दिया, किस लिए डोंट केयर दिया, है कि नहीं है? आया कि नहीं है? कौन पूछ रहा था? कैसा? आपको जो मैं बोला वो समझ में आया आपको? जैसा मतलब मेन वही बात हुआ ना कि एसआर में वो इनवैलिड होता है और जेके वाला में भी रेसिंग कंडीशन चला जाता है, तो दोनों में किसी का भी यूज तो कर पाते हैं नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 1-1 वाला केस में। फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे मत बोलिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किस लिए नहीं पड़ने वाला है? आपने कभी सर्किट के साथ उसको वैल्यू को पुट करके देखा? फर्क नहीं पड़ने वाला है मतलब क्या? व्हाट टाइप ऑफ फर्क नहीं पड़ने वाला है? मतलब एसआर ये Now you tell me, okay, now I'm asking you, why when the S value is 1 and R value is 1, why the value is not, that means ये invalid or ये indeterminate? अब मेरे को समझाइए तो। Forget about the conversion. हाँ, तो एस और आर दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो जैसे अगर एस का वैल्यू 1 होता है और आर का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे तुम ये मतलब क्यू और एस और आर दोनों का वैल्यू जब 1 होता है तो क्यू और क्यू बार दोनों का वैल्यू 1 आने लगता है या 0 आने लगता है, और ये तो फंडामेंटली अलग अलग है। वो ठीक है, आप थियोरेटिकली मत बोलिए। आप जो बोल रहे हैं ना वो थियोरेटिकली बोल रहा है। वो कैसे है? व्हाट इज द ये सर्किट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप? मैं जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का आप लोगों को डायग्राम दिया था और स्टेट टेबल दिया था, उसमें जब S इक्वल टू S एंड R इक्वल टू 1 होगा तो उसमें सर्किट में क्या आएगा आउटपुट अपने लोगों ने देखा था, ट्राई करके देखा था वो ना? ऐसे मतलब हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो वो क्या हो मेटास्टेबल स्टेट में चला जाता है, मतलब उसको अलग अलग, जैसे अगर क्यू से उसको एनालाइज करने की कोशिश करे तो उसका दोनों का अलग वैल्यू आता है, क्यू और क्यू बार। देखिए एनालाइज करने की कोशिश करे तो क्यू और क्यू बार का अलग वैल्यू आता है। आपका जो थिंकिंग है वो थिंकिंग करेक्ट नहीं है। हाँ, बात तो वही हो गया, वो S इक्वल टू R हो गया, दोनों का सेम, ऐसा नहीं होता है। नाउ यू आर बीटेक स्टूडेंट, यू कैन थिंक लॉजिकली। ये थ्योरी टाइप का आंसर मेरे सामने मत दीजिएगा। S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1 में पहले भी 2-3 क्लास के पहले आप लोगों को जब SR फ्लिप फ्लॉप समझा रहा था, वहां पे मैं दिखा रहा हूँ किस लिए वो वैल्यू किस लिए आ रहा है। सो हमेशा फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू क्या होगा? इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू अगर एक 1 होगा तो ऑब्वियसली इसमें एक 0 होगा। ये दोनों तो 1-1 नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या? दोनों तो 0-0 नहीं हो सकता है। ये कंडीशन, ये जब भी कंडीशन आएगा that means that particular flip flop is not a flip flop. It is not a behave properties of the flip flop. ये flip flop का properties नहीं है, ठीक है? But when we are based on the logic diagram of SR flip flop, but it is showing that particular circuit when S equal to 1 and R equal to 1, that time मेरे पास वो सर्किट नहीं है, आप लोग खोल के देख सकते हैं उस सर्किट में। आप देखिए प्रीवियस स्टेट में क्या कीजिए, S का वैल्यू 1 लीजिए और प्रीवियस स्टेट में R का वैल्यू 1 लीजिए। वो फीडबैक जो कनेक्शन है उसमें ट्राई कीजिए, तो दोनों का वैल्यू आइदर 0-0 आएगा, नहीं तो आइदर 1-1 आएगा। ठीक है, सो दैट मींस इट इज द इनवैलिड स्टेट। तो लॉजिकली बोलिए कि हाँ, but see here, obviously J equal to S and K equal to R when we are converting the JK to SR flip flop, because
JK is the refinement of the SR flip-flop, and this particular condition is not coming. Instead of this particular condition in JK flip-flop, it is coming as a toggle. Okay, either 0 and either 1. आपका नॉइज आ रहा है, आपका माइक्रोफोन बंद कीजिए. आपको समझ में आ रहा है? आ गया तो अभी. यस सर, समझ रहा हूँ. माइक्रोफोन बंद कीजिए. Okay, this way. And any other doubt? Any other student? JK flip-flop to SR flip-flop. Okay, now we can try. मैं आपको एक यहाँ पे कीजिए, अभी मुझे आउटपुट बोलिए. SR flip-flop to D flip-flop. Just you can tell me what is the expression and what is the expression. Just K-map तक बोलने से ही हो जाएगा. You can construct the K-map from the conversion table. At first, you can construct the conversion table. After that, from the conversion table, you can draw the K-map or construct the K-map. Then you can go for the logic diagram. What is SR flip-flop to D flip-flop? Just you construct. कीजिए, खुद कीजिए, अभी कीजिए, बोलिए क्या है वैल्यू एक्सप्रेशन. कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोग? SR flip-flop to D flip-flop. I am asking you, आप लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? SR flip-flop to D flip-flop. सर कर रहे हैं सर. सर कर रहे हैं. मंथन दास, आपका माइक्रोफोन ऑन कीजिए. मंथन दास, ऑन योर माइक्रोफोन. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं? यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लास? अब कहाँ पे? यस सर. कहाँ पे हैं आप लोग? अभी देखिए, ये क्लास चल रहा है, मतलब इसका मतलब नहीं है कि ऑनलाइन हो गया. कोई भी जगह में आप लोग क्लास ऑन करके मैं एक कम से कम क्लास है भाई, कम से कोई एक पार्टिकुलर रूम में जाइए जहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो, बातचीत कम हो. एक क्लास की तरह आप लोग बिहेव कीजिए. रास्ते में भी, गाड़ी में भी आप लोग ऑन करके काम कर रहे हैं. ये दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास. क्लास में आप लोग घूम फिर के कोई भी जगह में, पब्लिक प्लेस में, मार्केट प्लेस में, कोई भी जगह में ऑन करके आप लोग क्लास करेंगे, ये आपको समझ में आएगा कुछ? ये सुबह 9:30 बजे हो रहा है, इतना जल्दी कहाँ निकल के जा रहे हैं आप लोग? एक तो भाग गया और न पाइक. आपने फिर से माइक्रोफोन बंद कर दिया. मंथन दास, आपको मैं पूछ रहा हूँ. यस सर. आपको समझ में आ रहा है? क्लास आप लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं?
आपने कितना क्लास मिस किया, कितना क्लास मिस किया आपने, क्यों क्लास मिस कर रहे हैं? फिर से एग्जाम दे नहीं पाएंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर होगा, मिड सेमिस्टर में बैठ नहीं पाएंगे आप। इतना क्लास आपने मिस किया है, और सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है और जब एग्जाम होगा सभी को पास करा देगा। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट ना, यू आर रियली ये। सो आई एम कंडक्टिंग ऑल द क्लास वेरी रेगुलरली एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। फेल मतलब फेल। मेरे को मालूम है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो पूरा फेल हो जाएंगे ये पेपर में। और ये पेपर में फेल होने से क्या होगा, नेक्स्ट सेमिस्टर में ये पेपर और हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये तो एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, रट्टा मार के लिख दिया तो पास हो गया। जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई एक प्रॉब्लम आप लोग अननोन प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो ये कभी एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बंद कर दीजिए माइक्रोफोन। Sir, यस sir, S equal to D and R equal to D bar. Okay, now you tell me, when D value is 0, I'm talking, you go to the conversion table. When D value is 0 and the present state, that means Q value is 0, what is the value of R? R 0 or 1. Don't care, sir. Don't care, 0 or 1. Okay. Yes. Okay, when D equal to 1 and present state is 1, what is the value of S? Don't care, sir. When D equal to 1 and the present state is 0, what is the value of S? 1. Okay, your output is correct. Okay, now you can directly draw the logic diagram. Okay, this way, if you are trying yourself and if you are complete this particular problem yourself, then it is good. But again, if you are going some net and all those, खुद कीजिए आप लोग, ठीक है? आपने खुद किया है तो सोनक सेन ना, योर नेम इज सोनक सेन। इफ यू आर डूइंग गुड then it is really good. Okay, आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करना। बाकी लोगों को, किसी को मैं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, if anyone getting any doubt, then please ask me. Anyone getting doubt, then please ask me. सर, Yes. सर्किट डायग्राम में तो डी का एक इनपुट डायरेक्ट एस में जाएगा और एक डी नॉट लगा के आर में जाएगा और एक क्लॉक लगेगा ना, और एस आर और एक फ्लिप फ्लॉप बॉक्स। जस्ट ये आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। This one. So this is the logic diagram. जो आपने बोला है वही है, लेकिन simple. R equal to D bar means what? D is directly, because when we are converting this particular circuit, that time what happened? We are using the combinational circuit also, and you know sequential circuit is the combination of combinational circuit and some memory elements. Okay, this one SR we are using some particular memory elements here, and this one we are using as a NOT gate. Sorry, yes, NOT gate, and this is the structure of the combinational circuit, because R equal to R means what? R equal to D bar. Okay, so this is the normal D, and when we are fetching NOT gate, and this one is no more. This one is no more D. This one behave like as a D bar. Okay. Okay. Yes sir. And just try this one, and just next class you just show me your answer. Okay, so this is the homework. You can just convert JK flip flop to T flip flop, JK flip flop to D flip flop, D flip flop to JK flip flop, right? It's all the conversions of each other, or vice versa. Whatever we are completing from SR to JK, JK to SR, SR to D flip flop.
and just you can try T flip flop to suppose JK flip flop, how we are converting T to JK, or JK to T flip flop, or SR to JK flip flop. Sorry, SR to D flip. SR to T flip flop. Okay, so just you complete all the conversion. Okay, with the help of this particular similar process. Okay, you know about the how we can construct the excitation table. You know also what is the state table of KRN JK, and you can this way we can complete the conversion of flip flop. Okay. Okay, then thank you very much. Okay, so next class we are going some particular special sequential circuit that is called a counter. Okay, before counter we are discussing different type of topics like how we can draw the state diagram, or how we can construct some particular state sequence. That particular part we'll discuss, and after that we will go to the counter. Okay. Okay, you can leave one by